accessibility, safety, community acceptance, independent living, and quality of life is something that is for everyone. Disability need not to be an obstacle to the things that are deserved. With a view to empower the differently abled community, the Indian Institute of Madras has enhanced already developed wearable devices with the latest technologies that will assist people with hearing impairment and motor disabilities to communicate independently and enhance their quality of life. In an exclusive interview with PBNS, Professor Anil Prabhakar, head of CREATE, IIT Madras, highlight the need for indigenous development of assistive devices and elaborates on how it will cater in the way to empower differently abled people. और हाई एंड पे तो एप्पल और गूगल और सोनी के वॉचेस सब निकलते हैं। उनको देखकर हमने ये सोचा कि जो हम काम कर रहे थे इतने सालों से, उसको हम बढ़ावा क्यों ना दें? Why not focus it specifically on uses for persons with disability? तो मान लीजिए कि वैसे वो स्मार्ट वॉच तो मैं भी पहनता हूँ अभी यहाँ पे, राइट? लेकिन मैं कहता हूँ कि हम जो बनाते हैं उसको हम स्मार्टर स्मार्ट वॉच बनाते हैं। मतलब अभी तो मैं जब ये पहनता हूँ तो मैं इसको ऐसा हिला दूंगा तो कहता है कि मैं चल रहा हूँ, राइट? तो वो हम सभी जानते हैं जो पहनते हैं कि वो एकदम लो लो लेवल की है, और उसको बढ़ावा देने की बजाय, सिर्फ कंज्यूमर मार्केट के बढ़ावा देने के बजाय हमने ये सोचा कि हम पीपल विद डिसेबिलिटी उनके लिए भी क्यों ना बना दें। सो अभी जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसको एज एमएल कहते हैं, एज मशीन लर्निंग। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज को अगर हम स्मार्ट वॉच के अंदर डाल दें और उससे कोई ऐसे फीचर्स बनाएं जिनसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड या मोटर इम्पेयर्ड लोगों को लाभदायक हो जाए, तो हमने सोचा कि इस ऐसे काम से स्मार्ट वॉच तो रहेगा ही, लेकिन स्मार्टर भी हो जाएगा। The two major projects being developed by CREATE are Vibe and iGest for the hearing impaired and for persons with motor disabilities, respectively. Professor Prabhakar highlights how non-availability of affordable and sustainable assistive devices and systems, the hearing impaired, are excluded from the mainstream. He also emphasizes how the idea was conceived for bridging the necessary gaps. So there are two devices that we are working on. One is for the hearing impaired, and that was because one of my staff came to me and said, "Sir, आप hearing impaired के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं? कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं।" बात तो थी, सही थी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो शुरू कर दो। The problem is always starting, and once somebody starts it, then it is my job to ensure that it goes to its natural conclusion. तो हमारे सेंटर में अभी आप देखते हैं तो 5-6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे, उनमें से 2-3 तो होंगे ही जिनके हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं, लेकिन हम कभी उनके लिए डिवाइसेस बनाते नहीं थे। तो जब मेरे स्टाफ ने हमसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, अभी बनाना तो चाहिए, राइट? इट इज एन अनमेट नीड, अनमेट सोसाइटल नीड, एंड वी रियली शुड बी वर्किंग ऑन दिस। Similarly, for motor disability, actually, it came from the users. We used to work with a school called Vidyasagar, where there were children with cerebral palsy. उनको motor disability है, and they cannot speak, and they also cannot move their arms very much. तो हमने सोचा कि अगर उनका जो लिमिटेड मूवमेंट है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर दें, तो जो लोग खुद बोल ही नहीं सकते वो शायद 4 या 5 या 10 सेंटेंस बोल दें, लेकिन जो उन लोगों ने, जो बच्चों ने 4 सेंटेंस चुने वो है, मेरे माँ बाप को बुलाओ, मुझे डॉक्टर देखना है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे भूख लगी है। अगर 4 सेंटेंस बोल सकते हैं तो हाय वाई तो रहेगा ही नहीं। आज आप कैसे हो पूछेंगे ही नहीं, हो सिर्फ 4 सेंटेंस है। तो वहां से शुरू करके अगर हमने उनको 4 से 10 तक लेके आ सकते हैं, 10 से 20 तक लेके आ सकते हैं, तो बहुत लाभदायक है उनके लिए। तो हमारे पास टेक्निक्स तो हैं,
लेकिन कोई काम नहीं करते हैं ऐसे चीज़ों पे। तो सेंटर का ये मोटिवेशन है कि ऐसे प्रॉब्लम्स चुने और दिखाए लोगों को कि हो सकता है। बाकी तो बहुत लोग हैं इंडिया में जो कर कर सकते हैं ऐसे काम, लेकिन उनको आइडिया चाहिए, उनको थोड़ी-सी प्रेरणा चाहिए कि ऐसे काम होते हैं और हो भी सकते हैं। तो अपने आप शायद वो सॉल्यूशंस बन जाते हैं फिर उसके बाद। Explaining the affordability factor of the assistive devices, Professor Prabhakar suggested that the cost of the product is kept low so that it is an affordable device for its basic functionality. Price is always a big issue, and one of the reasons price is an issue is because the cost of development, the cost of research is put into the cost of the product. But we are a public funded institution. हम लोग taxpayer के पैसे से काम करते हैं. So I don't have to make a profit. So the cost of research and the cost of development can be borne by society. So the cost of the product, the actual cost of a smartwatch is usually 1/3 or 1/4 of the sale price. So we do not believe कि मुफ्त में बांटे जाए. We do not believe that. But we say that रिसर्च के पैसे हमें आपसे नहीं लेने हैं. हम आपसे सिर्फ वो जो मटेरियल कॉस्ट है उसके पैसे लेते हैं. And that price is, as I said, 1/3 or 1/4, maybe 30% of the sale price. So by changing the market dynamics, by changing how we do this, we are able to make it affordable. A CSR initiative, the devices are being developed by the Center for Rehabilitation, Engineering and Assistive Technology, CREATE. On this, Professor Prabhakar extends the message that government and institution can help, but it is the movement that has to come from the people. As a society, we have to look around us and say these are, 6% of our population has a disability. If you look around your office and there are 100 people, there should be 6 people with disability there. And what are the aids that they need? How can we satisfy them? And maybe some friend who's working in some engineering college, you go to them and say, ye bana do, right? Actually, that's a very good example. I have a device out here which we made for persons with visual impairment. And this came because one of the students in my class came to me saying her friend wanted a device. So it is by connecting people like that. It's not really government. The government, the institutions can help, but actually it's a movement that has to come from the people to say that my friends, my family, see, we are talking of devices for the hearing impaired. Our parents become hard of hearing. They cannot hear sounds. So it's not necessarily that you have to be born disabled. You could become disabled. And that population grows. As you grow older, as the nation grows older, that population will grow. And so we as a society should look around us and say, what can we do? How can we help? CREATE sets out to meet the major social need for indigenous development of low-cost technologies that address the needs of people with the different abilities in India. Well, that is all for today's segment. Thank you for watching.